Hello everyone, welcome back to my online class video standard 5th subject maths. Today I'm going to explain you new chapter number 5 decimals. So today we will learn about some new and different and very interesting method from this chapter like addition of decimal, subtraction of decimal, multiplication of decimal, division of decimal, addition and subtraction both we apply in the form of decimal. So all these things we will learn in this chapter. First, before starting solving the sum of decimal, the very first you should know about the place value. The place value before decimal and after decimal. Here you can see the decimal place value chart is given. In the middle section decimal is there, the column is decimal, before decimal and after decimal place value is given. So I'm going to explain you the place value before decimal and after decimal. Before decimal, the place value, the starting place value is ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s and millions. After decimal place is tenth, hundred, thousand, 10,000, 100,000 and million. Before starting solving the sum of decimal, very first you should know the before decimal place value and after decimal place value. Next, I'm going to explain you the decimal sums from exercise 5.1. Question number 1. For the number 162.873, write the digit in. Here the particular number is given and here we find out the particular number's place value by following our question. First question, tens place, tenth place. So after decimal, the first place value of 8 is tenth. So 8 is on the place of tenth. So our answer is 8. Next, B1, 100 place. After decimal, the second place value is 100. HUNDREDTHS. Place value of 100. Then write 7. 7 is our answer. Next, thousand place. So here we find out the thousand place after decimal place value. After decimal, 3 is on the place value of thousand. Then write 3. Next, ones place. Before decimal, the first place value of any digit is ones. So 2 is on the ones place. Next, from question number 2, form a decimal with. Here the particular sentence is given and here we form the answer in a decimal. So let's start our first question. First question, that is 9 in the 10th place and 1 in the ones place. So here we write the 1 on the ones place, 1 point, and 9 in the 10th place. That means after decimal is on place value of 10th. After decimal, 9 is on the place value of 10th. Then write answer 1.9. Second question, this is our first answer. And second question, 8 in the 10th place. Then write 8 in the 10th place. This is the 8 and 8 is on the 10th place. 7 in the 100th place. After decimal, 100 comes in the second digit. The place value of the second digit is 100 and the 7 is on the 100th place. And 6 in the ones place. This number is the place value of before decimal. And the first place value is ones. So 6 in the ones place, then write 6.87. This is our answer. Next, question number 3, convert to decimal. In this question, the fraction is given. Okay, so here we convert this fraction into a decimal, 6 upon 100. So here you can see the 100. So here we give decimal, give point in the place value of 100. The very first you should write 6 and give a point in the place value of 100. So ones, tens, 100. So give a point in the place value of 100
and before decimal and after decimal there is not a single number, so write 0 0. Here you can see in these questions, 0 is on the place value of 100. Okay, before decimal and after decimal there is not a single number, then assume 0 and our answer is 0.06. Next question, 7 upon 10. Here we give the decimal point in the place value of tenth. Then very first you should write 7 and give a decimal in the place value of tens. So let's count ones, tens. So here the place value of tenth is there. So give a point and decimal there is not a single number, then assume 0. Then write 0.7. This is our answer. Next, 8 upon 1000. Very first you should write 8 and count the place value of 1000. Ones, tens, 100, 1000. So this is the place value of 1000. Then give a decimal, and before decimal, after decimal, some place value is empty, then assume 0. So our answer is 0.008. Next, D1, our question is in mixed fraction. The very first we should convert the mixed fraction into a proper fractions. So here we very first we multiply 100 with 3, 300, 100 3s are 300 and 300 plus 2. So this is our method, 300 plus 2, that is 302 upon 100, and here you can see our question is created. So here we convert this fraction into a decimal, so give a point in the place value of 100 because the denominator is 100. So here we find out the place value of 100 like ones, tens, 100. So here we give the point in the place value of 100, and before decimal 3 and after decimal 0.2 is there. So our answer is 3.02. Next, exercise 5.2. Here you can see the decimal number is given, but here we find out the fraction of the particular decimal. That means the place value of decimal. First question, 0.4. So point is the decimal is on the place value of 10. So let's find out how we find out the decimal's place value. First number is on the place value of ones and the decimal is on the place value of tens. So here we write 4 upon 10. So that is why we write 4 upon 10. 10 in the denominator we write 10. Next, 0.03. Point is in this question this point is on the place value of 100, like ones, tens, 100. Like this we find out the place value of decimal and then write 3 upon 100 because the point is on the place value of 100. In the denominator we write 100. Our answer is 3 upon 100. Next, 6.85. Find out the place value of decimal. Ones, tens, 100. Again our answer is 100. Then write 685 upon 100. Next question is 10th one, 19.406. Here we find out the place value of decimal. So let's find out ones, tens, 100 and 1000. So decimal is on the place value of 1000. Then write in the denominator 1000 and in the numerator write 19406 upon 1000. This is our final. Next, I am going to explain you new topic like decimal and unlike decimal. Very first, I am going to explain you what is like decimal. Okay, so let's start our definition. Same number of the decimal places are called like decimal. इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद अगर क्वेश्चन में एक डिजिट है और बाकी सब नंबर के पास भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो हम उसको बोलेंगे लाइक डेसिमल. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो. फर्स्ट एग्जांपल 0.2 and 7.4.
1 decimal place each. So here you can see in this example, after decimal the both number have 1 digit each. मतलब पॉइंट के बाद दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक एक नंबर ही है, तो उसको हम बोलेंगे लाइक डेसिमल. नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं हम लाइक डेसिमल का. 3.17 एंड 14.42 टू डेसिमल प्लेस इच. यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट के बाद दोनों क्वेश्चन के पास दो दो डिजिट है, मतलब 17 और 42. पॉइंट के बाद दोनों के पास दो दो नंबर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लाइक डेसिमल. नेक्स्ट एग्जाम्पल 5.093 एंड 46.137 3 decimal places each. Here you can see in both question after decimal 3 digit is there. मतलब पॉइंट के बाद दोनों क्वेश्चन में देखो 3 नंबर है, एक में 2 एक में 3 ऐसा नहीं है, दोनों के पास 3 नंबर है, दोनों सेम हुआ तो उसको हम बोलेंगे लाइक डेसिमल. नेक्स्ट टॉपिक इज अनलाइक डेसिमल. अनलाइक डेसिमल किसको बोलते हैं, ओके, डेसिमल्स विथ डिफॉल्ट अनलाइक डेसिमल. इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद अगर क्वेश्चन में किसी के पास एक नंबर है, किसी के पास 2 नंबर है, किसी के पास पॉइंट के बाद 3 नंबर है, मतलब सबके पास अलग अलग है, पॉइंट के बाद 2 किसी के पास 3, तो उसको हम लोग लाइक नहीं बोलेंगे. क्यों, क्योंकि सबके पास अलग अलग है, किसी के पास 1 डिजिट है, किसी के पास 2 डिजिट है, सो हम उसको बोलते हैं अनलाइक डेसिमल. ओके, अगर अनलाइक डेसिमल रहेगा और उसको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको बिगर नंबर देखना है, और बिगर नंबर अगर पॉइंट के बाद उसके पास 3 नंबर है, सो वी चेंज ऑल द क्वेश्चन इन 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल. मतलब सारे क्वेश्चन को हम लोग डेसिमल के बाद 3 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, और जिसके पास एक डिजिट रहेगा उसको हम 20 एज्यूम करने को बोलेंगे. डैट मीन्स हम 20 उसको दे देंगे और उसको भी 3 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3, filling the boxes with greater, smaller or equal to sign. First question 14.51, 14.5. Here you can see the first number is 14, but after decimal 51 and the one question and the second question is 0.5. So 51 is greater than 5. Yes. यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देखो 14 दोनों में बिफोर डेसिमल, डेसिमल के पहले दोनों में 14 है, तो वो तो सेम हो गया. अभी हमको क्या देखना है, पॉइंट के बाद वाला नंबर देखना है. व्हाट वी कैन सी आफ्टर डेसिमल नंबर, द फर्स्ट इज़ 51 एंड द सेकेंड इज़ 5. मतलब पॉइंट के बाद एक के पास 51 है और सेकेंड नंबर है हमारा 5, तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से बड़ा है. यस, 51 इज greater than 5. So write the sign of greater in the bracket. बॉक्स है उसके अंदर आपको ग्रेटर डालनी, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर ग्रेटर है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 8.64 box 8.46. Here you can see first question 8.64. Here we see after decimal. हम लोग डेसिमल के बाद वाला नंबर देखेंगे. क्यों, क्योंकि डेसिमल के पहले वाला नंबर दोनों 8 है, दोनों सेम है. तो हम लोग क्या नोटिस करेंगे, अभी डेसिमल के बाद वाला नंबर हमको देखना है. द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर. So after decimal 64 and the second is 46. So 64 is greater than 46. Yes, then write the greater sign in the box. Next, F1 6.675, 6.756. Again here you can see before decimal the number is same. So which number we are going to see after decimal. After decimal 675 and 756. So 675 is smaller than 756. So here we write the smaller sign in the box. So next question H1 11.001 and the next is 11.001. Here you can see the both question is same, totally same. यहाँ पे आप देख रहे हो H1 में जो क्वेश्चन है वो पूरा सेम है. यहाँ पे हमने कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों नंबर सेम है. तो जब दोनों नंबर सेम होता है तो हम बीच में कौन सा साइन लगाते हैं, इक्वल टू की साइन. यहाँ पे ग्रेटर स्मॉलर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इक्वल टू की. ऐसा लिखना है इक्वल टू. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2
arrange the following number in ascending and descending order. Before arranging in ascending and descending order, very first we will convert our question into like decimal. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था like decimal क्या होता है, unlike decimal क्या होता है. If the question is in unlike decimal, then how we convert the unlike decimal into like decimal. हमको unlike जो question है हमारा उसको like में कैसे करना है. Very first we see our question which number is greater after decimal. After decimal, every number have after decimal every number have sorry not every number, one number have 3 digit. डेसिमल के बाद एक नंबर के पास 3 डिजिट है, तो हम सिर्फ वो जो लार्जर नंबर है 6.004, 6.004 इज़ द लार्जर. सो डेसिमल के बाद इसके पास 3 नंबर है, सो हम सारे क्वेश्चन को 3 नंबर में कन्वर्ट कर देंगे. डैट मीन्स वी कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू ए लाइक डेसिमल. लाइक वेरी फर्स्ट राइट अरेंज इन लाइक डेसिमल. सबसे पहले आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है अरेंज इन लाइक डेसिमल्स. सो राइट 40.06. हियर यू कैन सी give one more digit 0 because here we change the unlike decimal into like decimal. हम क्या कर रहे हैं, इसको unlike decimal को like decimal कर रहे हैं. मतलब हम सभी नंबर को पॉइंट के बाद 3 डिजिट में करना है, और जिसके पास 3 डिजिट नहीं है उसको हम 0 दे देंगे. ओके. So next 6.04. 04 is there in the question. Here we give one more 0 to converting this decimal to converting this unlike decimal into like decimal. Next 400.6, only one digit is there. Here we give the two more digit like 0.600, and the last is same, write down the same as it is 6.004. So here you can see our question already converted into like decimal. So let's arrange this like decimal into ascending and descending order. So very first we find out the smaller number to bigger number. So very smaller number is 6.004. Then give one number. Then next bigger number is 6.040. Then give two number. Next bigger than 2 is 40.060. Then give 3 number, and the next 400.600. This is your 4 number. So arrange this number in sequence. Write 040 comma 40.060 comma 400.600 like this. And next arrange this question into descending order. That means greater to smaller. First greater number is 400.600. Next 40.060. Next 6.040. And last 6.004. Last number is very smaller. So due to this way we find out the ascending and descending and arrange the unlike decimal into like decimal. Next our new topic is addition of decimal. Exercise 5.4, question number 1, add the following decimal. Here you can see the three number is given in the first question, 9.4, 0.55 and 49.87. So I'm going to explain you how to arrange the decimal in the column, and after arranging how we add the all decimal. Very first we find out the larger number and arrange in a column larger to smaller. The first larger number is 49.87, next 9.40, and the last 0.55. Like this way we arrange our decimal into all three columns. Then after arranging this decimal we add all the decimal, and our total is 59.82. Next question number 2, 1.3 and 306. So very first find out the larger number. The larger number is 354.26. So write in the first column. Second number is 2.73. Then write in the second column. And the third is 1.3. Then write 1.30. If the any places is empty, then write 0. After arranging this all number, add all the decimal. So total of this decimal is 358.29.
Next topic is subtraction of decimal. Now I'm going to explain you from this exercise 5.5 how to subtract the decimal. First question, 5.721 minus 3.807. Subtracting, where first you should find out the greater number. Always keep the greater number in the first column and in the second column smaller number at the time of subtracting the decimal subtraction. So first write 5.721 and in the second column write 3.807. Then subtract the both decimals and your answer is 1.914. Next, second question, 10.03 minus 8.53. Very first find out the greater 03 and the small 8.53 and keep the first number in the first column, in the greater number in the first column 10.03 and second in the second column write 8.53. Now subtract the both number. 3 minus 3, that is 0. 0 minus 5 is not possible, then take 1. Then 0 converted into 10, then subtract 10 minus 5. Next, 0 minus 8. 0 minus 8 is not possible, then 0 will take 1 from the other partners and 0 converted into 9. Then subtract 9 minus 8, answer is 1 and then write 0 as it is. And always remember one thing कि आपको जो पॉइंट है पॉइंट के नीचे ही लिखना है. पॉइंट आगे पीछे थोड़ा भी होगा तो आपका आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा. ये चीज़ अच्छे से याद रखो कि डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी हम करते हैं तो पॉइंट का क्वेश्चन पॉइंट के नीचे ही लिखना है. पॉइंट आप थोड़ा भी आगे या थोड़ा भी पीछे लिखा आप लोगों ने तो आपका पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा. एंड द आंसर इज 1.50. यहाँ पे हम 0 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 1.50. नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल. इसमें हम क्या करेंगे, डेसिमल में एडिशन भी है और साथ में सब्ट्रैक्शन भी है. लाइक डेसिमल अलग एडिशन अलग है, सब्ट्रैक्शन अलग है, ऐसा नहीं है. इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में दिया है. तो देखते हैं कि ये मेथड कैसे सॉल्व करना है. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.6, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द value of the following. You can see in the question the addition and the subtraction both sign is given. So how we will solve? First we follow the sign. Okay, so first number is 9.483 plus 53.876. So very first we add this both number. 53.76 plus 9.483 and our total is 63.359. So here we take this total and we go for the subtraction with other number. मतलब हम इसका दोनों का एडिशन का जो टोटल आएगा वो उसको 41.406 के साथ माइनस करेंगे. क्यों? क्योंकि बीच में साइन माइनस की है. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस टू नंबर. Write in the first column greater number and the second column smaller number. First number is 63.359 minus 41.406 and your total is 21.953. तो जो हमारा ये दोनों को प्लस करने पे जो हमारा टोटल आएगा उसको हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने पे 21.93 जो हमारा आंसर आ रहा है उसको नेक्स्ट नंबर के साथ माइनस करना है. डैट मीन्स ये जो हमारा टोटल है इसको 3.983 के साथ माइनस करेंगे बिकॉज साइन है हमारे बीच में माइनस. सो सब्ट्रैक्ट 21.953 विथ 3.983 एंड आवर टोटल इज 17.970. नेक्स्ट लास्ट है हमारा प्लस 6.75. ये जो हमारा टोटल है उसको हम लास्ट नंबर के साथ प्लस करेंगे and our last total is 17.970 and our answer is 74.720. इस तरीके से हम प्लस और माइनस दोनों साथ में करेंगे डेसिमल मेथड में.